I request Ravneet Kaur ma'am to kindly present herself on the screen. The first PowerPoint presentation online will be by Ravneet ma'am, Assistant Professor, Deviate Jalandhar. The title of her paper is Mental Health in AI Era. I request Ravneet ma'am to kindly join and Yes, share. ma'am, I have joined the. I welcome you, ma'am, in the national seminar at Swami Premanand Mahavidyalaya Mukerian. So I request Thank you, ma'am. you to kindly start up with your presentation, please. Yes, actually, ma'am, my topic of the presentation is mental health in AI era, and I'll be discussing the current trends which are prevalent in this AI era when we talk about mental health. First of all, there is 24 by 7 support, and here in AI powered chatbots, they are gaining huge popularity due to which the cognitive behavior theory techniques are there, and these techniques they work in such a way that helps in stimulation of human like conversations as well as understand the intent and solve problems. Then next trend is the high engagement and effectiveness. Many studies they have indicated that these tools they help in reduction of and depression symptoms up to 30 to 50% in specified populations. Since many tools they are available under AI, they are adaptive in nature. Therefore, it becomes very easy to cure mental health issues as it provide anti support. It's very much necessary for any human being in these times. The next trend is regarding psychological digital signatures. In order to create digital psychological signature, this AI tool it analyzes real-time data from smartphones and certain devices which are wearable in nature and includes terms such as geolocation, typing speed, checking patterns, etc. There comes the proactive monitoring and detection of certain conditions are being done. The detection of relapses in case of bipolar disease or depression, etc. And this detection can be done in advance, period of which maybe even 1 week. Like earlier on, it were not detectable, but now with the help of AI, it is detectable in nature. And moreover, there has been improved accuracy also. There are certain models which analyze combination of voice, facial expression, or language patterns that have shown higher diagnostic accuracy as high as 92% in comparison to that of single source data. Then hybrid models are also being used in terms of AI. Herein, I would like to emphasize on the human in the loop system, where AI supports and improves efficiency in clinical settings. This invention is very helpful for the therapist basically, even who can easily improve efficiency while they are going to prepare the reports for the final presentation to the patient. Then example is being taken as we are all with virtual reality. It is increasingly related to create controlled and safe environments for the treated anxiety disorders and its phobias. And these are also showing that multiple certain reductions are being cleared with the help of this effective care being established in the area. Then voice cloning domination is also there. Another trend it is that voice cloning dominance is there. Here in this trend, it is basically like we have already seen the deepfake visual and frequency, and these cases they have proved to be drastically for the economies and for the people who have presented their images in the now I would like to request my colleague, Ms. Tisha Hebbel, to further give knowledge about the challenges which are being faced in the mental health in this case of AI. Good afternoon, ma'am. So I'll continue with the challenges. The first challenge is techno-stress and burst-out. Constant dependency on AI tools has resulted in techno innovation and techno load, which has further given rise to fatigue and inability with the routine, due to which are slipping into anxiety and depression. And next we have AI-induced dependency and psychosis. Due to much dependency on AI tools, users are experiencing delusional
thinking such as belief that AI is real and is in extreme cases, leading to drastic steps such as self-harm or suicide. And next we have job insecurity and identity loss. It includes the problems like fear of replacement that are creating anxiety and self problems and loss of personal value, all have a very high scale. Next, we have data privacy and confidentiality risks. It includes that since we are sensitive and personal data of the user is shared for used AI-based apps for mental health, and high risk of breach of confidentiality and misuse of information is developed. And next, we include algorithm bias and inequality. Since in order to avoid misdiagnosed or inadequate care of marginalized population, AI models are trained on such databases which are limited and also lack diversity. In next, we include data privacy and confidentiality risks. Since sensitive and personal data of user is shared for used AI-based apps for mental health, high risks of breach of confidentiality and misuse of information is developed. Next, we have dependency and the safety concerns. With the increase in the AI companies, certain concerns such as psychological dependency, attachment issues, etc., have also risen. Next is the regulatory focus. There has been rise in demand for regulatory frameworks in order to ensure data security and safety of AI-driven mental health tools. Next is emotional adequacy. AI is just a tool which is mistaken as a replacement for emotional intelligence. The frequent use of AI may struggle for genuine empathy or appropriate advice as the beliefs that AI to be true and real. Next, we have information overload and cognitive fatigue. Excessive exposure to AI generated content and bulk notification causes cognitive load, which reduces the power of attention and increases the emotional exhaustion of the user. And next, we have recent case studies which we have discussed in our paper. In this, we have included that not to forget the recent cases which were reported due to AI and creative chaos across the nation. The case may came into light that use of जल्दी wrap up करें. Okay, okay, ma'am. Now I come to the conclusion. In conclusion, I will only say that the life of human beings is affected tremendously due to increase in the use of AI technology. No doubt it is necessary for growth and development of the nation, but more than a boon, it has proved to be a curse as mental health of individuals is damaged to an irreparable extent. Okay, thank you so much. Thank you so much, ma'am, for a very valuable research you presented on the mental health in AI era. Thank you for your collaboration between two of Praveet ma'am and Isha ma'am. Thank you so much. And now, yes, three of us are here. The time was presenting the paper, so thank you so much for presenting and being the part of the national seminar. Thank you. Now I announce the next participant. Pavitra ma'am, are you online? Please share your PowerPoint and start. Yes, ma'am. Yes, ma'am, please. May I start now? Yes, may I start? Yes, sure, sure, ma'am. Pavitra ma'am's paper is on digital era and its effect on mental health. She is from Department of Computer Science, Khalsa College, Gardiwal. Is it visible and am I audible? Yes, ma'am, very fine. Okay, okay. So very good afternoon to everyone. I'm going to present a presentation on the digital era and the mental health. So, firstly, I will start with maybe I want to know that how many times you have checked your phone. Maybe 10 times, 10 times, or maybe still not checking your phone. Why you are checking your phone? Because your phone gives you ping, some WhatsApp messages, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आपका कोई notification आया है, आपके घर ऐसा हो गया है. So your mind is occupied with this thing.
So let's start with our first slide. So our first slide is on digital. What is a digital era? So it is a shift of internet मतलब हमने shift किया है वन फ्रॉम तो करने शिक्षा की कि हम पुराने में और हमने शिफ्ट किया है इंटरनेट में सो वी कैन शिफ्ट पूरा इंटरनेट with that into the smart technology. So इसमें चीजें क्या क्या आई हैं? There is internet connectivity, there is a mobile connection. आजकल 5G आ गया है, 6G आएगा in future, तो there is AI and big data. Big data is collection of data. So हमें what this thing is giving for? The digital era में क्या दे रहा है? The digital era is giving us mental health, bad mental health, at least it is giving a digital addiction it is giving and the information overload. We are so much overloaded with information that हमें ये नहीं पता है कि हमारा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है हमें कहाँ डाटा उठाना है फोन पे रखा हुआ है लैपटॉप पे रखा हुआ है पेनड्राइव में रखा हुआ है फोन पे रखा हुआ है सो इट इज ऑल अबाउट दिस डेटा नेक्स्ट इज who is the part of the future? Which is the part of the future? हमने क्या किया इस पिक्चर का पार्ट के बच्चे ने स्टूडेंट्स क्या ग्रैंड पेरेंट्स क्या आजकल बात है क्या आज की फैमिली क्या हम घर में बैठे हुए हैं सो वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस पिक्चर हम सब लोग इस डिजिटल एरा में शामिल हैं सो व्हाट इज डिजिटल पैराडॉक्स डिजिटल पैराडॉक्स क्या होगा कि भाई हम वी आर कनेक्टेड बट वी आर नॉट कनेक्टेड वी आर सेइंग द वर्ड दैट वी आर कनेक्टेड हम एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन कहीं ना जाके हम फोन को लेके कहीं बैठे हैं कि व्हाट वी आर डूइंग ओके so that we are more connected but sometimes we feel more alone why क्यों हम कॉल नहीं करते नहीं the good thing is that we talk to anyone भाई हम किसी से बात कर सकते हैं किसी के साथ फन कर सकते हैं बट मेरे पास ये है कि हम देखते हैं कि दूसरे की लाइफ ऑनलाइन फन करते हैं someone like this work at online they chat a lot but sometimes they feel lonely so get up and complain to feel like this is the picture नेक्स्ट स्क्रोलिंग और हम स्क्रॉल करते हैं क्या क्या पैदा कर रहे हैं व्हाट्स स्क्रोलिंग इन बिल्ट इन अस बैड न्यूज कहीं ना कहीं से खबर आ गई ये है बार बार स्क्रॉल करके फॉर्म हो किसी हम चीज मिस तो नहीं कर दी कि नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया तो टीचर का तो प्रिंसिपल का तो हम हाइड और स्ट्रेस फील करते हैं और नॉट डूइंग नेक्स्ट वी हैव व्हाट रियली हैपनिंग सच्ची में क्या हो रहा है हमारा ब्रेन जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है लाइक टुडे इज द वर्ड ऑफ एआई एआई में क्या हो बिग डाटा क्या है कलेक्शन ऑफ डाटा आजकल क्या है कलेक्शन ऑफ डाटा बिग डाटा इसलिए आया क्योंकि एआई का इन्वेंशन हुआ और इतना ज्यादा डाटा आ गया कि डाटा को हैंडल करना मुश्किल हो गया सिमिलरली आजकल इतना डाटा आ गया कि हमारा सर को हैंडल करना मुश्किल हो गया वी कांट इवन रीड वी कांट इवन थिंक कि कितना डाटा हमारे दिमाग में भरा चुका है दिस इज द ओवरडोज ऑफ ड्रग्स हम रील्स देखते हैं स्क्रॉलिंग करते हैं लोग देखते हैं दिस इज द बैड पार्ट ऑफ इट नेक्स्ट आर द की फैक्टर्स मेंटल हेल्थ में क्या की फैक्टर डिजिटल आइसोलेशन में क्या रिलेशनशिप खत्म होता है और सोशल मीडिया प्रेशर हो रहा है ऑनलाइन बुलिंग होती है बच्चों को हरास किया जाता है एंड नेक्स्ट इज द डिजिटल एडिक्शन हम पॉजिटिव साइड क्या कर सकते हैं और पॉजिटिव साइड इज कि ऑनलाइन प्रैक्टिस लो आप उसके बाद अपने आप को थोड़ा अलर्टनेस महसूस करवाओ जो इतना indulge मत हो इन चीजों में that we feel bad ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो where people communicate on some good topic नेक्स्ट इज हम क्या कर सकते हैं वी आर द बॉस वी कैन चेंज द गेम और वी कैन चेंज द गेम वी कैन थ्रो विदाउट थिंकिंग नो वी विल थ्रो जब हम को पार्टनर को मैनेज थ्रो वी विल सेट द टाइम वी विल जब से करना है when you want to check it because these are the things so what families can do so थोड़ा डिनर आप फैमिली फ्री फोन फ्री डिनर्स करो किसी को एक्सपेक्ट मत करो कि आपने किसी को क्वेश्चन दे दिया है कोई किसी से बात कर लिया है तो रिप्लाई इमीडिएटली करेगा डोंट टेक एनी स्ट्रेस ऑन इट नेक्स्ट है कि हमारा वर्क कल्चर है वो थोड़ा एक बाउंड्री पे होना चाहिए then there will be no journalist direct explanations after hours and there will be no region of public disclosure this information जो है वो नहीं फैलनी चाहिए एंजाइटी नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन को लेके स्मूथली चलना चाहिए हमें so the conclusion that the digital India is not inherently harmful but it requires balance and awareness and the sustainable digital is key to a mental health
So let's embrace the technology mindfully, not mindless. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your very nice presentation. And thanks for being a part of the national seminar at Swami Vivekananda Mahavidyalaya in Kenya. I now thank you. Thank you so much, ma'am. I now request Varun Pratap Singh sir, who is a research scholar from the Nana Devi University, Amritsar, with consequent digital media, concept work, and digital self-perception. Sir, are you Morning, sir? Are you with us? Sir, ma'am, are you ready? Yes, ma'am. Okay, ma'am, start with your presentation, please. Okay, good morning, everyone. Today, I am presenting my paper on artificial intelligence in mental health care, opportunities, ethical challenges, and future direction. Mental health is one of the biggest challenges in the today's world. Many people suffer from depression, anxiety, stress, and emotional problems. According to World Health Organization, millions of people worldwide need mental health, but many did not receive proper treatment. There are several reasons: shortage of trained professionals, high cost of therapy, social stigma, and lack of service in the rural area. This situation makes us think, can technology help? This is where artificial intelligence or AI comes. Artificial intelligence refers to computer systems that perform tasks that usually require human intelligence. Mental health care. AI is being used in a different way. Firstly, we have AI chatbot and visual therapists. These are the applications that can talk to user, provide emotional support, suggest coping strategies, and even use technique for cognitive behavioral therapy. They are available 24 hours a day, which means sport is always accessible. Second, AI health is used for early detection. It can analyze pattern in speech, writing, sleep, or behavior and identify earlier stage of depression or stress. This helps in prevention before the problem becomes severe. Third, AI support mental health profession through clinical discussion support system. This system analyzes patients' data and support treatment options. However, they do not replace doctors, they only assist them. Now, let us discuss the opportunities and benefits. One of the major benefit is accessibility. People in remote or rural area can receive support through digital platforms. Another benefit is scalable. One AI system can help thousands of people at the same time, which is not possible for the single therapist. AI also allows personal treatment. Traditionally, many people have been more comfortable sharing personal problem with a digital system because it feels private and non-judgmental. This may reduce stigma. However, along with this benefit, there are important ethical challenges. The issue of privacy, biases, and the major concern in AI lack of real human empathy. There is also a risk that people may over dependent on technology and avoid seeking professional help where it really needed. In the coming year, we may see more advanced AI systems integrated with wearable devices, improved transparency through explanation AI, and strong government regulation to provide users. Artificial intelligence has the potential to transform mental health care by making it more accessible, affordable, and personalized. However, it may be developed and used with responsibly, and technology can support human care, not replace. The future of mental health care is balancing evolution with empathy. Thank you, ma'am.
Thank you so much, ma'am, for being a part of the national seminar and for giving the very nice presentation. Thank you so much. I will announce the name of Bhavani Pratap sir. Are you there? Okay. Now I request Dr. Palvinder Kaur, Assistant Professor in the Department of Economics, SD College, Hoshiarpur. Are you there, ma'am? Palvinder ma'am, are you there? I again request Bhavani sir or Dr. Palvinder Kaur, if any one of them is available. Yes, ma'am, I'm available. Please continue with your presentation, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Present here. The topic of my presentation is the impact of mobile phone uses on mental health. This is a clear, this is a review article, and we have 15 articles have been reviewed for this, and the time for this is 2011 to 2023. It is a comprehensive technical analysis delineating the association between user pattern, including duration, frequency, and problematic use, and psychological outcomes such as anxiety, depression, and sleep disturbance. Next is research overview, scope, and methods. First, study design. It is predominantly cross-sectional designs or cross-sectional studies, and there is 23,000 in these papers. Developed population such as adolescents, university students, and adults have been used in sample. The methods we have taken the methods such as screen time, checking frequency, SAT SF scale, that is smartphone addiction scale, night views, social media. The outputs of these studies are mental health outcomes such as depression, anxiety, sleep, stress, critical notes, methodological context like data relies largely on self-report measures. Several studies statistically adjusted for confounding variables to isolate mobile phone impact. Next are the key findings. Ma'am, I would like to present through the PPT. Yes, ma'am, fine. I'm not able to share it. And please wrap up in within 1 or 2 minutes, please. Okay, ma'am. Okay. If it's not sharing, just speak up, please. Okay, okay. Key findings are screen time more than 3 hours leads to 2.5 times depression. Bedtime use more than 20 minutes also leads to anxiety. And problematic use 1.8 times stress. Academic stress more than 4 hours, 1.42 problematic use of mobile phones. Jacob shows that as we use more and more mobile phone, we have more depression and insomnia. Yes, sir. Next are the recommendations. Enforce digital curfews. Limit phone use 60 minutes before bed to prevent melatonin suppression and cognitive browser. Then bad notifications. Move from constant checking to scheduled window, reduce anxiety associated with the fear of missing out. Then prioritize active engagement. Keep focus from passive scrolling to meaningful social interaction or utility-based use. Now, what are shortcomings of this study? First is for causality. Causality is predominance of cross-sectional design limits causal inferences. Second is measurement, reliance on self-reported screening tools versus clinical diagnosis or objective logs. Then future research directions, transition towards longitudinal cohorts and experimental design using objective smartphone logs to better understand close response leadership and long-term developmental impacts. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your research on mobile phone hazards. And I think it will be useful, those who have heard your research paper. Thank you so much for being the part of the national seminar at FA College, Mukerian. So I now the next participant. Neha ma'am, are you ready? Are you here? Yes, sir. Okay. Neha ma'am is the MEd student from Guru Nanak College of Education, Delhi. Her title of paper is Online Harassment and Cyberbullying
I will start with your paper and just wrap in 5 minutes, please. Okay, ma'am. Good afternoon. We are living in a digital age. The internet, smartphones, and social media are not daily routine. We use them for study, communication, entertainment, and sharing content. They make life easier for teaching. But along with manageable, a serious problem also face cyberbullying and online threat. Online threat means insulting, accusing someone through the platform. Cyberbullying is repeated and international harmful behavior done using mobile phones, computers, or in traditional beliefs, the child may feel safe after reaching home, but in cyberbullying, the victim cannot escape. Hard messages, photos, or comments can reach them even at midnight. Because of this, cyberbullying is more dangerous and stressful. Forms of cyberbullying and online harassment. Cyberbullying can happen in many ways. Abuse, messages, sending insulting or threatening text that repeatedly sharing private photos, uploading someone's picture without permission, fake accounts, creating false profiles, scams, or influencing cyber traffic, continuously following, monitoring, or tracking the person online. Trolling, posting harmful comments, the emotional reaction, hate teams, insulting someone based on gender, or appearance. All behaviors have one common to emotionally hurt the victim. Cause static bullying. There are many reasons people want to feel superior, fear pressure, to look cool in front of friends, jealousy and insecurity, especially during teenage years, prevents conflicts or arguments turn into online attack. Lack of moral education, not understanding the consequence of online abuse, and exclusive use of social media also increase with when students spend time online, they become more exposed to harmful interactions. Effect of victims, cyberbullying seriously affected mental and emotional health. Victims often experience anxiety and fear, low self-confidence, lack concentration in study. In certain cases, victim may develop self-harm thoughts because harmful posts remain online for a long time. Emotional pain also weighs longer. Effect of bullying not only victims but bullies are also affected. Children who bully others may become aggressive, rebellious, and behavior, face relationship problems that can last. So, cyberbullying harm both individuals and society. Role of parents, teachers, and peers. Parents' role. Parents should monitor student internet usage, set time limits for devices, talk openly about online safety, encourage children to share problems. Teachers' role. School should teach digital ethics and responsibilities, conduct awareness programs, provide funds in sports, take complaints seriously. Friends Friends play a very important role. Many students share problems with friends first. If you see someone being bullied, do not laugh or forget harmful content. Report the victim, report the incident. If small sport can prevent big emotional damage. Prevent safety measures. Students can protect themselves by following the first step. Do not reply to abuse messages. Log report the bully. Take the screenshot and attempts. Keep social media account private. Avoid sharing personal information. Do not transgress. Make the problem stronger. Speaking up has stopped. Technology and awareness. Many online platforms now appreciate tools and follow systems. Artificial intelligence also tries to detect harmful messages, but technology alone cannot solve these issues. The real solution is awareness and awareness. Before posting anything online, we should ask ourselves three questions. Is it true? Is it fine?
Exactly. We know we cannot post things. Started putting it more like serious problem to today's digital world. Where mental relation and relationships learn online create a safe online environment. Sharp, confident, teacher is the word that clear. Better. Define online because knowledge please wrap up. Thank you so much. Okay, thank you very much for presenting your paper and being part of the national seminar at Education College of India. I now request Ramandeep ma'am, are you ready? Ramandeep ma'am, she was sort of counterpart for women, model town Ludhiana, social media impact and digital intervention. Raman ma'am, are you there with me? Ma'am, it was my name. Okay, it is fine, fine, ma'am, fine. Radhika ma'am, you can start with your presentation. Radhika ma'am is assistant professor at GGS College, Chandigarh. Her title of paper is Digital Self, exploring the interplay between boredom, mindfulness, and technology usage. Ma'am, please start with the presentation. Thank you so much for giving me this opportunity. I hope my screen is visible to everyone. Yes, ma'am, it's very fine. Please continue. Thank you. The idea from this paper generated from the fact that from the IBS model, which clearly states that an individual's interaction with the policy at the center, along with the effect, the discomfort created in the situation, and how does it lead to behavioral patterns. So, for the study, A had studied motor improvements, which is the discomfort. How does it lead to digital technologies? Over here, the paper just on social media, as well as the technology usage. How emotional regulation, cognitive factors, and most importantly, behavior mindfulness is being associated with boredom and how are they using for interaction between boredom and social media use. So, I had a sample of 400 students, college students from Punjab University in Chandigarh, and these were the five tools that were used for assessment. It was through regression, hierarchical regression analysis was carried out, and it was found that there's a reciprocal relationship between boredom and smartphone usage. Boredom, reciprocal relationship was found through carrying boredom as gimmick, and then smartphone usage was used as gimmick. So how boredom it was found that boredom led to smartphone usage. Similarly, in the second model, it was found that smartphone usage also led to a lot of boredom problems. In the study, I found a very interesting paradox, which I termed as the mindfulness paradox. I believe it is considered through logic, common sense. We say that mindfulness should lead to lesser boredom. But in the study, a positive correlationship was found between mindfulness and boredom. For this, it is hypothesized that it is because mindfulness, what is mindfulness? Mindfulness is allowing us to be present in the moment, right? So, higher mindfulness allowed the students to be more aware of their current state that they're getting bored, which eventually may lead to them leading better choices of how they want to use their time. So this is plus the tool used was how they view mindfulness and how much importance they pay. So more of an experimental study in the context will be more helpful. So these were the major findings of the study. Need for cognition was found to be emotional regulation was not so very important. It was found that only, which also states that whether you are giving you are giving an emotional reason to your situation or you're trying to associate logic to your situation, that
Yes, ma'am, fine. Please continue. Firstly, a very good afternoon to everyone. I would like to thank SN College of Caring for giving me this golden opportunity to expatiate my views on the topic social media impact and digital intervention. So I've been co-authored by Dr. Mukerian for Assistant Technical and College Program. That is me, a student of the same college. To the introduction, it has already been discussed by my fellow presenters that the digital age has completely changed communicate to information and has impacted the mental health of the people completely. The literature brings together findings from 13 peer-reviewed studies. So, two key questions. First is how does social media use affect mental health and well-being? And secondly is how effective are digital interventions, including psychological models that explain the online engagement and mental health connection. Being comparison theory that suggests that people compare their lives and abilities to those of others that can lead to negative self-confidence and gratification theory that claims that people choose media to satisfy certain needs, such as staying connected or seeking entertainment. When online interactions remain shallow or unsatisfying, people not trickles to the often worry that others are enjoying reward and that has been linked to lower life satisfaction and mood problems. There is a replacement hypothesis. So various authors noted that time spent on social media replaces activities that are essential for mental health, such as face-to-face interactions, exercise, or getting sufficient sleep. Few methodological approaches in literature. First were the systematic reviews and meta-analysis, so that aggregates the findings from numerous studies to identify overall trends and patterns in recent peer-reviewed research. Cross-sectional surveys that examine the associations between social use and mental health and single count of time. The mixed method study that combine quantitative surveys and qualitative interviews. The longitudinal research. So these studies follow individuals over time to understand how social media may lead to mental health. Then the pilot studies and randomized controlled trials. So as already discussed by the fellow presenters, it has negative impacts like depression, anxiety, emotional distress, cyberbullying, loneliness, self-esteem and body image issues, media addiction, and destructive sleep cycle. But on the flip side, it has a positive impact also, like feeling of connection and support, community bonding, escalating awareness, valuable peer support, safe spaces and anonymity, social connection, and identity development. But there are a few vulnerable populations, like the people, those who are aged from 9 to 12. Gender differences and socioeconomic background can also shape how social media affects mental health well-being. Mental health conditions. So those who are already experiencing mental health challenges may face even greater risks. So these are a few mental health interventions digitally that can prove to be successful, like the multimodal online therapy platforms, the mobile health applications, online counseling and telepsychiatry, AI-driven tools and chatbots, online support communities, and digital literacy and psychoeducation programs, which has various implications. Patients, mental health professionals, educators, parents, policymakers, and social media platforms, as well as for the researcher. Suppose from a few limitations, like methodological limitations, and there's a lack of diversity in research samples, intervention research limitations. Here are a few recommendations. Like the longitudinal and experimental research is urgently required. Cross-sectional investigations are also essential. And how cultural norms and values shape the psychological impact of digital technologies. Mechanism-focused research can also be conducted. Intervention research should also prioritize rigorous randomized controlled trials. Patient research must examine the barriers and facilitators influencing clinical research is also equally important, along with that positive psychology approaches to reform. I would like to say that a balanced approach featuring digital literacy and tailored policy is essential to maximize benefits while mitigating risks.
Thank you so much, ma'am, for elaborating on the social media so much. It was a very nice presentation. Thank you for being the part of the national seminar and SPN College of Kenya. I invite the next presenter, Vani Pratap sir, research scholar from Guru Nanak Dev University, Amritsar. Sir, are you ready? Yes, ma'am, I'm ready. Please start with your presentation, and title of your paper is Consequences of Digital Media on Self-Worth and Physical Self-Perception. Please continue with your presentation and kindly wrap it within 5 to 7 minutes. Okay, ma'am. This is Bhavani Pratap, research scholar from Guru Nanak Dev University. My topic is on consequences of digital media on self-worth and physical self-perception. So, in recent years, the use of digital and social media has increased rapidly, especially among adolescents and young adults. Platforms such as Facebook, Instagram, and Snapchat have become an essential part of daily life. These platforms allow users to communicate, share images, and express themselves instantly. However, along with these benefits, digital media has raised serious concerns regarding self-worth and body image, particularly among young people. Adolescents are more psychologically vulnerable, and constant exposure to idealized images can strongly influence how they see themselves. We talk about self-worth and body image. Self-worth refers to how valuable and capable a person feels about himself. It can be relatively stable over time, but may also change depending on daily experiences and social feedback. Body image, on the other hand, refers to how individuals perceive and feel about their physical appearance. Body dissatisfaction arises when there is a gap between a person's real body and their ideal body. Research shows that dissatisfaction is common in both males and females and can occur at any age. However, with more experienced adolescents or age when identity and self-concept are still developing. So role of social media is like that. It plays a powerful role in shaping the beauty standards most images shared online are edited, filtered, and carefully selected to present a perfect version of reality. As a result, users are exposed to unrealistic and unattainable body ideals. And a key psychological process involved here is social comparison. On social media, like comments, shares, act as indicators of social approval. When individuals receive positive feedback on their posts, it may temporarily increase self-esteem. However, failing to receive enough likes can lead to self-doubt, anxiety, and even depression. There are two types of social media. One is the social-oriented use, other oriented use. I will talk about gender and cultural influence, gender expectations and cultural standards further complicate body image issues. Girls tend to use image-based platforms more frequently and are more affected by appearance-related comparisons. This explains why body dissatisfaction, eating disorders, and low self-esteem are more commonly reported among the adults and children. Psychological consequences related to social media uses are like these low self-esteem, body dissatisfaction, disorder eating habits, depression and anxiety, reduced face-to-face social interaction. But there are positive aspects of social media too, and it's like this. Despite its negative effects, social media is not entirely harmful. It can promote self-expression, social connection, sport if used wisely. Already negative effects controlling strategies are also can also be used like media literacy education to help users understand that online content is often unrealistic. Promotion of diverse and inclusive body representations encourage healthy online behavior and reduce comparisons. From parent, teacher, and counselor involvement. Come to the conclusion, social media has a dual role. While it offers opportunities for connection and empowerment, excessive exposure to idealized images can negatively affect self-worth and physical self-perception. Impact depends on how and why social media is used. There is a strong need for continued research, awareness programs, and educational interventions to help young people develop positive body image and self-esteem in that digital age. This is all from my side. Thank you. Thank you so much, Swanvita sir. Thank you for your presentation and thanks for being the part of the national seminar at SPN College in Kenya. I now invite Tanu Mahajan ma'am from DAV College London to present her paper. Ma'am, are you there?
Ma'am, am I audible? Yes, ma'am, you can already. Welcome, ma'am, National Seminar and European Qualification, ma'am, and can start your presentation. Yeah. Good afternoon, everyone. Myself, Tanu Mahathir, as Chief Professor, PA College London, but Canada from Trade. So today I'm just going to present getting more views on the topic and that brings integrating nature, mindfulness, and well-being. So basically, what I want to convey about the health. What we define health, that is state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease, right? But in the modern era, in the daily life, we are definitely involving visual interactions, long hours of screen time, exposure to social media, and constant interaction. All of which is definitely going to influence our mental, emotional, and even physical health. At the heart of Ayurveda, if you people believe, there are three doshas, one, and pitta. These three, they one physical, mental, and emotional function. And you know, each individual has a unique component of challenges. We came susceptibility to stress, illness, and imbalance. So, this Ayurveda, it prioritizes prevention over the care. In our daily routine, we aim to maintain balance by regulating sleep patterns, digestion, activity levels, mental engagement, and so on. We talk about three gurus which affect our mental health. This is Sattva, that is clarity, balance, that's activity, and task, that is inertia. And basically, being a chemistry teacher, I would love to involve inertia more in our life. So, in case of dealing with the practical approaches or back, if we talk about, we can think about the meditations, we can think about the pranayams, we can take in care about the mindful nutrition. Then we can basically go for self massage and we can spend time in nature. They are the five framework for human well-being. And in my field, the first is competence, second is the confidence, third is the connection, fourth is the character, and fifth is the feeling. These five they provide a comprehensive framework to foster resilience, balance, and meaningful living. And if in the future era we talk about the new plans or new strategies, then we have to establish digital boundaries. We have to create curate online content. We have to go for mindfulness and self-reflection. We can take more care of our physical health and outdoor engagement. And the most important is connecting with nature. As we know, nature, it provides a cooling environment and we can ourselves define to the regular exposure to green spaces or natural spaces so that we should disconnect ourselves from the digital overload and reconnect ourselves. The digital tool for mental health in the 20th century. Digital technology that has transformed nearly every aspect of life, that is into mental health. So there are various digital platforms which provide mental health. For example, NIMH, that is National Institute of Mental Health and Mental Health Foundations, and the many other institutions also. So to grow for our mental health, we can have mental health apps, online support community, digital campaigns, AI assisted mental for many options are there. And last but not least, gamification and motivation. This is the best way to ensure my sharing. So concluding, say that self-awareness and emotional intelligence, they form the foundation of our practice. So we can control our thoughts, our feelings, we can spread confidence all around. That will change our more and more strong mental health. Thank you. Thank you, ma'am. Yours was the last presentation, and you have given the key message to all the viewers here. And thank you so much for your presentation, and thanks for being part. We whatever see updated करना जब हो जाएगा we let them know मेरे कल आ गए तो that's our content class भी हो गया. This was all done. Thank you so much, guys. Thank you so much. So I think now we are done with the online presentations. If anyone is left, kindly let me know. Okay. Thank you so much. Now we are done with the online presentations and we move on to the next session of the offline presentations. And for the offline presentations, I invite Professor Padvi from the Department of Computer.
Today I'll just say about something on the basis of some reports. The basic effect on the mental is to refer to the psychological and emotional effect the exclusive or improper use of the digital technology. That is the basic definitions of the digital impact on the mental health. Firstly, you have excessive screen time and addictive digital use. मेनली देखा गया क्या है कि आजकल जो टाइम आ चुका है हम मोस्टली बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं स्क्रीन टाइम के ऊपर रेदर देन हम ज्यादा मोस्टली कब फोन यूज करते हैं जब हम रात को अपने बिस्तर पे जाते हैं तो एक सर्वे के अकॉर्डिंगली हम इतने ज्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं हमारे सेमिनार में भी हमें बताया गया है कि जब ये गाजियाबाद यूपी की एक न्यूज है आपने सभी ने सुनी होगी 3 - 30 12 of 14 and 16 और जब ये इनको एक लेटेंसी कोरियन गेम थी ये टास्क बेस्ड गेम थी और जब इनके पापा ने इसको जस्ट डांटा कि आपने गेम नहीं खेल ली तो इन्होंने क्या किया रात के 2:30 जंप फ्रॉम द बिल्डिंग दैट इज you can say that that is students goes to the very mentally sick positions. According to the survey October 2024, ये सर्वे हुआ अक्सर 70,000 पर्सन के ऊपर पेरेंट्स के ऊपर और इन्होंने से 66% ने बोला कि हमारे जो बच्चे हैं वो अडिक्टिव है इसके सोशल मीडिया के ओटीटी के ऑनलाइन वीडियोस गेम के और 58% ने बोला कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है इसका रिजल्ट आ रहा है बच्चे इम्पेशंस है अग्रेसिव है किसी बच्चे से फोन छीन के बताओ बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं जब बच्चों की एक रिपोर्ट आ रही है उसने बोला हुआ है हमने बताया हुआ है फैक्ट है कि जो बच्चे 1 से 2 साल के हैं इनका जीरो टाइम है ये बच्चे स्क्रीन के ऊपर नहीं देखने चाहिए और जो बच्चे 3 से 4 साल के हैं इनका 60 मिनट है बट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एम्स रायपुर ने डिफाइन की थी कि जो बच्चे 5 साल के हैं उनका टाइम डेली 2 आवर्स का है और जो छोटे बच्चे हैं उनका मैक्सिमम टाइम 1 आवर्स तो है ही है क्योंकि ये हमें जीरो बताया गया था अब आप बोलते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका इम्पैक्ट छोटे बच्चों पे पड़ता है कि उनका जो माइंड साइकोलॉजिक फैक्टर है उनकी जो स्टेट है ब्रेन की वो चेंज हो रही है डे टू डे रिजल्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शनैलिटी स्किल डे बाय डे लो हो रही है जैसे सेमिनार रूम में आपने देखा होगा कि बोला गया था मैम ने बताया कि IQ लेवल इस टाइम सबसे डाउन जा रहा है इसीलिए जा रहा है क्यों बच्चे इमोशनल कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं ठीक है सोशल इंटरेक्टिव खत्म हो रहा है अगर 4 बच्चे बैठे हैं तो 4 अपने गैजेट पे बैठे हुए हैं उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है इंटरनल मोटिवेशन नहीं है डिस्कशन के अकॉर्डिंगली बताया गया था कि जो 12 से 9 साल के बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम एक्सेसिव चलता जा रहा है और इससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई वो कौन सी थी मायोपिया ठीक है बच्चों के देखने की दूर की दृष्टि कमजोर हो रही है और ये इंडियन टुडे ने रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2050 के अकॉर्डिंगली जो 50% बच्चे हैं वो 2050 तक मायोपिया का शिकार होंगे ही होंगे
देन वी हैव नेक्स्ट रिपोर्ट, स्लीप डिसऑर्डर। आजकल हमने देखा कि हम जितना टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर, रात के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर स्लीप डिसऑर्डर की फंक्शनैलिटी डिफाइंड हो रही है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर 3 to 6 ईयर, इंग्लैंड की रिपोर्ट है, अगर हम 10 मिनट ज्यादा स्पेंड करते हैं तो हमारा स्लीप डिसऑर्डर 1 घंटे तक खराब हो जाता है। इसका रीजन जो था मेटाटॉनिक था। ये एक ऐसा हार्मोन है, जब ये कब डिजाइन किया जाता है, जब हम सोने जाते हैं, जब हम सोते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, तो हमारी बॉडी को एक मैसेज कन्वे किया जाता है इस हार्मोन्स के थ्रू की बॉडी रिलैक्स होने लगी है। बट जब हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, कोई खून पड़ा हुआ है, तो यह इस हार्मोन को सप्रेस कर देता है, जिसके कारण हमारा स्लीप डिसऑर्डर कंटिन्यू हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको रिपोर्ट बताना चाहता हूँ, एक वर्चुअल अटोमिज्म। इससे क्या हो रहा है, सोशल विथड्रॉ हो रहा है, ये स्लीप डिसऑर्डर के कारण हो रहा है। नो डेवलपमेंट इन सोशल स्किल्स व्हेन लैंग्वेज कम्युनिकेशंस। हमने एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमने ये देखा कि छोटे बच्चों को क्या किया जा रहा है कि अगर मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं या एम्प्लॉय हैं, तो अपनी कन्वीनियंट के लिए वो बच्चों को क्या दे रहे हैं, मोबाइल फोन दे रहे हैं। वो दोनों अपना काम कर रहे हैं, बच्चा अपना काम कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, बच्चे की बॉडी डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। वो बच्चा 4-5 साल का हो चुका है, बट वो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर रहा, उसकी फिजिकल ग्रोथ ही नहीं हो रही। When nearly quarters of kids see gaming as an exercise. स्पोर्ट्स डे के बारे में यूथ को पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट्स को फाइंड आउट करते हो, प्रेफरेंस देते हो, तो आधे में से ज्यादा बच्चों ने बोला कि जो एक गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, इज ऑल्सो द काइंड ऑफ एक्सरसाइज। इससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ओबेसिटी। इसमें क्या हुआ कि 80% जो है मॉम्स क्या कर रही हैं कि बच्चों को जस्ट टीवी लगा के दे रही हैं या मोबाइल फोन दे रही हैं, और बच्चा क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि वो खा क्या रहा है, उससे डाइजेशन नहीं हो रहा, उसके मुंह में कितनी देर तक कोई चीज रह रही है उसको ये भी नहीं पता। अब नेक्स्ट रिपोर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, साइबर बुलिंग एंड हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट। साइबर बुलिंग में एक और वर्ड हमारे आया, दैट इज द डिजिटल अरेस्ट। हमें ये पहले पता नहीं था कि ये ऐसी चीज भी होती है। ये लास्ट मंथ एक कपल था, अपने सभी ने न्यूज सुनी होगी, ये यूएस रिटर्न था, और इसको डिजिटल अरेस्ट किया गया मोर देन 14 डेज, और इससे 15 करोड़ रुपीज को रिकवर कर लिया गया। देन डिजिटल एडिक्शन, मेंटल हेल्थ रिस्क। इससे काफी हमारे मेंटल हेल्थ रिस्क ऑब्टेन्ड होते हैं। पंजाब की ये खरड़ की न्यूज है, पेरेंट्स ने अपने अकाउंट में कुछ पैसे रखे हुए थे, पापा ने उसको फोन दिया, बच्चे ने क्या किया, 12 लाख रुपया गेम के ऊपर उड़ा दिया। जब बच्चे पेरेंट्स को पता चला, बच्चे को डांटा, तो बच्चे ने क्या किया, सुसाइड कर लिया। दैट इज द मेन इफेक्ट, दैट इज द बिग चैलेंज फॉर अस। हमने एक ऐसी चीज बना दी जो हमारे सामने ही आ रही है। ठीक है, वैसे तो मेरे पास काफी बड़ी तो है, पर पंकज सर को भी देनी है, तो मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ इसको। ये एक और पबजी की गेम, क्योंकि काफी देखा हुआ है पबजी की गेम। इसमें क्या हुआ कि बच्चों के मेंटली हेल्थ, बच्चों का डिसऑर्डर। एक बच्चे की जो लास्ट में मोहम्मद क्या था, इसने हेडफोन लगाए हुए थे, वो इकलौता बेटा था, हेडफोन लगाए थे, इसके दिमाग की नस फट गई थी। ठीक है, कंक्लूड करता हूँ इसको यहाँ पे कि अगर हमने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा, सोल्यूशन भी हम लोग ही हैं। हमारे घर में, हम अपने कॉलेज में, हम सोसाइटी में एक ऐसा जोन हमें अपने घर पे भी बनाना पड़ेगा, यहाँ पे नो इंटरनेट जोन होगा। अगर हम खाना खा रहे हैं तो बच्चों को अपने साथ बिठा के खिलाना पड़ेगा। अगर उनको फोन नहीं यूज करने देना, तो कम से कम ऐसा टाइम रखो जिसमें पेरेंट्स भी फोन यूज ना करें, और बच्चों के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर ने आज कंप्यूटर के साथ साथ बायो भी पढ़ा दी है। मेरा टॉपिक था सर्केडियन रिदम्स पे, जिससे हमने मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के बैलेंसेस के बारे में बात करना था। तो मेरा पेपर जो था वो सर ने प्रेजेंट कर दिया। नाउ आई इनवाइट प्रोफेसर पंकज सिंह, हेड पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एसपीएन कॉलेज मुकेरिया, टू प्रेजेंट हिज पेपर।
Oh, So good afternoon, everyone. So today I'm going to present paper on digital detox, tools, strategies, and benefits for managing excessive device use. So excessive device use affects mental, physical, and social well-being. Digital detox helps reduce stress and improve overall health. The study explored what are the various causes we use excessive mobile, what are the strategies we can use, and what are the tools and what are the benefits of digital detox. Introduction. Now, as you know, digital devices are part of everyday life, and overuse leads to stress, sleep issues, and reduced focus. So it weakens social relationships. So balance with technology is essential. सुबह से हमने जितने भी की नोट स्पीकर को सुना, जहाँ जितने भी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हमने देखी, उसमें हमने ये देखा कि हम एक्सेसिव यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, और एक्सेसिव यूज करते हैं उससे क्या होता है, स्ट्रेस होती है, स्लीप इशू होता है। तो मेरा टॉपिक ये है कि जो एक्सेसिव यूज करते हैं उसको लिमिट कैसे किया जाए। So what is the research aim? So study impact of excessive screen time and role of digital detox, and what are the objectives. So first of all, I will identify negative effects of screen use, then explain digital detox concept, what are the various tools and strategies, and discuss challenges and recommendations. So first question is why we use excessive screen. So what are the reasons? What are the causes of excessive screen usage? सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग, हर किसी का अकाउंट है सोशल मीडिया पे, ठीक है। गेमिंग एंड ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, इजी इंटरनेट एक्सेस, आजकल इंटरनेट जो है वो इजीली अवेलेबल है, डेली कोई लिमिट नहीं है। तो दिस इज द अगेन द रीजन ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन यूसेज। वर्क एंड ऑनलाइन स्टडी नीड्स, हमारी वर्क रिक्वायरमेंट ही ऐसी है, हमारी स्टडी नीड ही ऐसी है, ऑनलाइन असाइनमेंट्स देना, कि हमें एक्सेसिव स्क्रीन को यूज करना पड़ता है। इन्फ्लुएंसर कल्चर, यू कैन सी इन्फ्लुएंस कल्चर चल रहा है, ठीक है। ऐसी रील्स डाली जा रही है, रील्स पे ज्यादा व्यू आ रहे हैं, अगर किसी की रील्स के ऊपर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें भी अपनी रील्स डालनी चाहिए। इन्फ्लुएंसर कल्चर चल रहा है। frequent notification, this is the excessive screen usage main reason, frequent notification, ठीक है। हम कितनी नोटिफिकेशन आती है, कभी व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ गई, कभी इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आ गई, तो हम नोटिफिकेशन जैसे ही आती है हम फटाफट से अपना फोन ओपन करके देखते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन यूसेज एंड fear of missing out. This is the another reason of excessive screen usage. So what are the negative effects? Negative effects are physical effects, eye strain, headache, poor posture, sleep disturbance. Mental effects, stress, depression symptoms, mood swings, lack of concentration, overthinking, and social isolation, reduced face-to-face communication. These are the negative effects of excessive screen usage. And behavior effects, screen addiction, we are wasting the time, difficulty controlling phone use, less physical activity, unhealthy habits. So you can see there are so many negative effects of the excessive screen usage, and how we can control this with the help of digital detox. So what is digital detox? Simply temporary break from digital devices. It can be short term or long term. It will help improve focus and well-being. What are the types of digital detox? Full detox. So no devices for fixed time. Partial detox limits specific activities. Scheduled break. So device free hours and weekend retreats. So often in nature or workshops that promote mindfulness. What are the strategies for digital detox? So scheduled device free periods. हमें ऐसे टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि इस टाइम मुझे अपना फोन यूज नहीं करना है। इतने सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, आपको बताया एक्सेसिव स्क्रीन यूसेज के, तो हमें उसको कैसे ओवरकम करना है।
So we need to define the device free period. ठीक है, जैसे बिफोर स्लीपिंग यू कैन से कि आधा घंटा सोने से पहले मैंने फोन यूज नहीं करना, या आफ्टर वेकिंग अप आधा घंटा उठने के बाद मैंने फोन यूज नहीं करना। हम फोन ज्यादा यूज करने की बजाय वी कैन पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज लाइक मेडिटेशन, योगा, जर्नलिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और वी कैन ऑल्सो रीड द बुक्स। लिमिट नोटिफिकेशन। तो सबसे बड़ा रीजन ही यही है एक्सेसिव स्क्रीन यूसेज का, नोटिफिकेशन। ठीक है, हम लोग फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं, नोटिफिकेशन आ जाती है। आजकल तो ये माहौल बन गया है कि हम लोग एक ऐसी पोस्ट डाल देते हैं और हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक आए, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक आए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए, ये ऐसे मेंटल प्रेशर। ठीक है, कई बार तो ऐसे होता है कि हम किसी को दिखाने के लिए कोई पोस्ट डालते हैं, और जब तक वो कोई पोस्ट देख नहीं लेता, हमें चलता रहता है, हमें बार बार नोटिफिकेशन, अच्छा अब देखी होगी पोस्ट, अब देखी होगी पोस्ट। लिमिट द नोटिफिकेशन। ठीक है, माई सजेशन इज डोंट यूज द ऐप। फेसबुक की ऐप मत यूज करो, इंस्टाग्राम की ऐप मत यूज करो, रादर यू कैन यूज दीज इन द ब्राउजर। ब्राउजर में इनको आप यूज कर सकते हो। उससे क्या होता है कि ब्राउजर में आपको स्पेशल जब यूजर नेम और पासवर्ड पिन करना पड़ेगा, तो कुछ ना कहीं हद तक एक्सेसिव स्क्रीन यूसेज जो है वो कम होगी, कि आप ऑनलाइन मीडिया जो है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर यूज कर रहे हो। ठीक है, नोटिफिकेशन को तो बंद ही कर दो, नोटिफिकेशन बंद होनी चाहिए। ठीक है, जब लिमिट होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो so now I am going to quickly wrap up. So we would spend time in offline hobbies. So device free zones we should create. So this is the main slide. So I will just spend 2 minutes on this. Okay. What are the various apps and tools that you can use that will help you in digital detox? So screen time trackers. स्क्रीन टाइम ट्रैकर होते हैं, जैसे iOS का हो गया, जहाँ डिजिटल वेलबींग है, तो हमें उस पर शो होता है कि मैंने खुद को कंट्रोल करना है, तो मैंने डेली 4 घंटे से ज्यादा फोन यूज नहीं करना। तो मैं अपना डिजिटल वेलबींग पे जाके देख सकता हूँ, या स्क्रीन टाइम पे जाके देख सकता हूँ कि मेरा स्क्रीन का टाइम कितना हुआ है, तो मैं उसके हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। There are so many apps and website blockers you can use, like OneSec, Digital Detox, Stay Focused, Hold 30। इन वेबसाइट पे आप लोग ऐप को थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक भी कर सकते हो। ठीक है, माइंडफुलनेस ऐप यू कैन ट्राई, हेड स्पेस, काम, इनसाइट टाइमर, गेमिफाइड डिटॉक्स ऐप। दिस इज द बेस्ट ऐप यू कैन से, फॉरेस्ट ऐप। इसमें क्या होता है कि हमने डिसाइड कर लिया कि मैंने फोन को ओपन नहीं करना, तो क्या होगा, एक फॉरेस्ट ग्रो करना, एक लीव ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे मैं फोन को यूज करने शुरू करूंगा, तो ये मुझे बोल देगा कि अगर तुम फोन यूज करने चाहोगे, तो जो आपने इतनी मेहनत से फॉरेस्ट जो आप ग्रो कर रहे हो, ट्री ग्रो कर रहे हो, तो वो सारा इन वेन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें भी क्या होगा कि यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द फोन। तो टूल्स फॉर मॉनिटरिंग चिल्ड्रन डिवाइस यूसेज। हम लोग, हमारे बच्चे फोन यूज करते हैं, या आपके छोटे ब्रदर सिस्टर फोन यूज करते होंगे, तो आप उनकी डिवाइस यूसेज को भी मॉनिटर कर सकते हो। तो दीज आर द हेल्पफुल ऐप, यू मस्ट गिव इट ए ट्राई। 360, एंड्रॉइड पेरेंटल कंट्रोल, गूगल फैमिली लिंक, किड्स गार्ड, मोबी किड्स, कस्टोडियो। So these are the help, these are the apps with the of which you can monitor the children's device usage, and even you can control which app your children can see, and you can also close the internet for some time. Okay. So due to some time limit, I am stopping right here. So thanks. Thank you everyone. Thank you so much, sir. Definitely, your presentation was of significance to us all, because students are using mobile phones and that is hazardous for them. And now we have seen what computer people wanted to say about this AI and the digital apps. Now I invite the commerce people. I invite Professor Sonia Agarwal, Assistant Professor, Postgraduate Department of Commerce, to come up with her presentation. Ma'am, please.
Ma'am, please wrap up in 5 to 7 minutes. Okay. एक मिनट इसके बाद महिमा मैम आ रहे सो कैंसिल करो ईशा महिमा के बाद ईशा नहीं होगा नहीं होगा प्रोपोजल तो वो एंड में आप में ये देखना क्या है मैंने बोला वो एडवाइस दैट है हम हो तो नहीं फिर आ रहा है नो याद करो Good afternoon, everyone. It's truly an honor to be here among such respected scholars and professionals. Let me begin with a small story. A young software engineer in Bengaluru once told me, my office has given me a laptop. I am having free working hours, but still I feel I am working 24 by 7. Even when I'm at home, I am never off work. यही है डिजिटल कामकाज की सच्चाई घर पर रहकर भी काम से छुटकारा ही नहीं मिलता This is not an isolated case. Whether it's an IT professionals in Gurgaon, teachers adapting to online platforms in Punjab, or call center employees in Noida, the digital workplace has brought both opportunities and pressures. And that's exactly what my presentation today is about. The paradox of digital workplace and how digital HR practices can support employees' mental health. Workplace today are more connected than ever. Digital tools like email, chat apps, HRMs means human resource management systems, video conferencing make it easy to stay in touch. But this connectivity has a flip side because every coin is having two sides. So blurred boundaries between work and personal life is there. हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कब हम जॉब पे हैं और कब हम घर पे हैं घर पे रहते हुए हम जॉब के काम कर रहे होते हैं और जॉब पे घर के बारे में सोच रहे होते हैं So many IT employees in Bengaluru or Gurgaon find themselves answering emails late at night, leading to fatigue and stress. And this paradox leads us to the next question. Why is this study important? So India is witnessing rapid digital transformation, whether it's a startup in Hyderabad or traditional industries in Ludhiana adopting HR technologies. Remote and hybrid work models have expanded, but burnout is rising. And because of cultural stigma, many employees hesitate to talk about their mental health. So, before we go deeper, let us first understand what we mean by digital HR practices. So, when we talk about digital HR, it's not just about automating processes, it's about reimagining how technology can support people. Digital HR brings
Together, tools like HRMS, platforms, AI driven analytics, wellness app, online counseling. But the real question is, are we using these tools only for efficiency or also for empathy? क्योंकि तकनीक तभी सार्थक होती है जब वह इंसान को सहारा देती है, ना कि उन्हें और बोझिल बना दे. So, whether it's SAP, Zoho People managing employees' data, Practo offering mental health services, or virtual learning platforms, building skills, the purpose must always be to enhance human being. So, with this understanding, let's move to the objectives of my study. My study focuses on five main areas: examining digital HR practices, analyzing mental health importance, evaluating tools, identifying challenges, and then suggesting the strategies. Now, why is employee mental health such a strategic HR concern? Mental health. It includes emotional, psychological, and social well being. It directly affects how employees think, feel, and perform at work. Poor mental health can reduce productivity and can weaken the relationships. As we all know, healthy employees create healthy organization. Work from home fatigue, long hours, competitive environments are the major stressors. For instance, call center employees in Noida often face high performance pressure, while remote workers in Pune struggle with isolation. In fact, India has recently taken a step towards protecting human employees from digital overload. The right to disconnect bill. कभी तो सुना होगा ये नाम, right to disconnect bill, introduced by Priya Sule in 2025, gives the workers the legal right to ignore calls and emails after the office hours. This reflects a growing recognition that mental health and work life balances are as important as productivity. Therefore, organization can no longer ignore this dimension. This is where the digital HR can step in with mechanisms to support well-being. Digital HR supports mental health through early identification, confidential access, flexible arrangements, continuous listening, and personalized interventions. Infosys uses Pulse surveys. उनके पास एक ऐप है Pulse surveys to detect stress early, while TCS offers flexible work policies. Some of the strategic initiatives already being adopted are digital wellness apps. बहुत सारी organizations भी use कर रही हैं, but generally these are in metros. Online counselings, AI-based surveys, and virtual engagement platforms. Wipro, for instance, has introduced digital wellness program to support employees across India. And these initiatives bring dual benefit, not just for the employees, but for organizations too. Supporting mental health benefits both the organization and employees. Happier employee means lower absenteeism and turnover. Companies like HCL have seen improved engagement after investing in wellness platforms. The most important point is mental health investment is not charity. It's a strategic investment. It pays back in a stronger employee and stronger organization. So when we care for employees' mind, we are also caring for the future of organization. It's a win-win. But of course, there are some challenges too. Yes, challenges. So barriers include privacy concerns, digital literacy gaps, cultural stigma, and resistance. So जैसे कि semi-urban areas में the main problem is unequal digital access.
जैसे पंजाब की अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे वर्कर्स को वेलनेस एप्स के बारे में पता ही नहीं है, जबकि मेट्रोज में IT employees are very much aware that how to use these wellness apps. So this is the main drawback. For this, organizations must ensure confidentiality, promote psychological safety, and continuously evaluate the mental health of their employees. And here I want to share a thought कि तकनीक हमें जोड़ सकती है, लेकिन भरोसा और संवेदनशीलता ही रिश्तों को मजबूत बनाती है. So I will conclude by saying that स्वस्थ मन ही टिकाऊ संगठन की नींव है और डिजिटल HR is not bad, but it must be used in such a way that it never disturbs the mental peace of employees. So let us remember, digital HR is not about system, it is about soul. And when we nurture the minds of employees, we nurture the future of our organization and our nation. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, आखिर आपने एम्प्लॉयज की बात को पूछ लिया. एज जैसी उम्मीद होती है कॉमर्स वालों से वैसे. So now I invite Mahima ma'am. Please come forward for your presentation. Mental health and role of educational factor. Huh? Oh, such a presentation is Respected principal sir and all the fellow participants, good afternoon. My name is Mahima Thakur and here I am going to present my research paper titled Impact of Remote Work with Health and Online Learning on Mental Health. After COVID-19, digitalization changed the way we work and learn. While online platforms gave us flexibility and access, they also created challenges like stress, digital fatigue, burnout, and social isolation. In this presentation, I will highlight these mental health impacts and suggest possible remedies. Objective of this study is to analyze the effect of remote work on online learning, identify mental health issues from digital exposure, and suggest wellness strategies. I use secondary data in my study, which consider the data from WHO, APA, UNESCO, and enhanced. The time period of this data is from 2020 to 2024. So from this data, the key finding of my study is first, 7% of students reported virtual education fatigue, clearly shows that prolonged online learning is creating mental and physical exhaustion in learning. Secondly, 58% of professionals experience work-life imbalance, indicating that work life imbalance, indicating that virtual work environments are blurring the boundaries between personal and professional life. About 45% of respondents reported anxiety due to continuous screen exposure, while 5% experienced sleep disturbance, highlighting the serious impact of digital engagement on mental health. Among students, the major concern was isolation and engagement, negative affect motivation and learning outcomes. On other hand, professionals reported burnout and low productivity, suggesting that work settings are reducing efficiency and overall well-being. Overall, these findings indicate that although virtual education offers flexibility, it also creates and psychological effect on lifestyle challenges.
So in the recommendation, based on the finding of the study, the following recommendations are suggested to reduce the virtual educational fatigue. Chronic educational institutions should enforce digital wellness policies to ensure healthy screen usage and balanced academic routines. Secondly, it is important to maintain structured online schedule with regular breaks so that students and professors can avoid continuous screen exposure. Third, individuals should be encouraged to practice mindfulness and engage in physical activeness, which help to reduce stress and improve concentration. Further, we provide online counseling services and helplines to support mental well-being. To sum up, I conclude that digitalization become a part of our life. We can't apart ourselves from this. There is need to use balanced approach so that we can achieve our goals without compromising our mental health. Thank you. Next, I call upon Professor Isha Sharma for her presentation on mental health and role of educational institutes. 5 minutes में wrap up कर लेना. Good morning, everyone. My research paper topic is mental health and role of educational institutions. मेंटल हेल्थ क्या है, स्टूडेंट्स के अंदर मेंटल हेल्थ क्या है, बच्चा क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या उसका बिहेवियर है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर. अगर बच्चा एक्टिव है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, वो अच्छी डिसीजन ले सकता है, ही और शी मेक गुड रिलेशनशिप विद देयर कलीग्स, विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर फैमिली. कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि वो मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज जो हैं वो बच्चों में फेस करने को आते हैं. कौन से कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बच्चे में फेस करने को आते हैं. फर्स्ट है, ये कुछ 6 मेन प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें फर्स्ट जो आपको शो की गई है बाइपोलर डिसऑर्डर. जिस बच्चे की मेंटल हेल्थ इतनी अपसेट रहती है कि उसका जो बिहेवियर है, उसके जो मूड स्विंग्स हैं वो बार-बार होते हैं. ठीक है, अगर वो खुश है, दुखी है, कैसा भी है, बट उसका जो बिहेवियर है, उसके जो मूड स्विंग है, वो बहुत जल्दी-जल्दी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बच्चा हर टाइम स्ट्रेस नहीं रहेगा, अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएगा, वो अपने रिलेशनशिप पर अच्छा फोकस नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, एंग्जाइटी. अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, वो डिप्रेस्ड है, उसको मेंटली प्रेशर रहता है, उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेंगी. बच्चे रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस नहीं देख पाता है कि रियल लाइफ क्या है, रियल लाइफ क्या है. साथ में स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने को आनी स्टार्ट हो जाती हैं. बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि रियलिटी में रियलिटी क्या है, रियल लाइफ क्या है. कॉजेज क्या है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के. फर्स्ट जिसमें आता है एग्जामिनेशन प्रेशर. लास्ट बात करें, जो स्टूडेंट्स वीक हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ अपसेट रहती हैं, उनमें अगर किसी भी तरीके का प्रेशर है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, चाहे किसी भी तरीके की, लाइक जहाँ पे मेंशन किया गया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस. प्रेजेंट के टाइम क्या है, हर बच्चा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता है. वो सोशल मीडिया पर क्या देख रहा है डिपेंड करता है कि वो चीज को पॉजिटिव वे में ले रहा है या नेगेटिव वे में ले रहा है. क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरीके की चीजें जो है वो की जाती हैं. नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस. अब जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स की बात करें तो फैमिली प्रॉब्लम्स कई तरीके की होती हैं. फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, कोई घर पे इशू है, कोई फैमिली इशू है, इस तरीके के इशू हैं वो बच्चे के जो मेंटल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं. नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ जो है बच्चे की थोड़ा डिस्टर्ब रहती है. अब एजुकेशन हमारे जो इंस्टीट्यूट है क्या रोल रह सकता है कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए. अब इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड सो सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट. लाइक हम जो कॉलेजेस होते हैं या जो इंस्टीट्यूट है
वहाँ पे जो है काउंसलिंग सेंटर्स जो है वो ओपन किए जाने चाहिए। काउंसलिंग सेंटर्स क्या है, जहाँ पे फ्री बच्चों की मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको काउंसलिंग दी जाती है, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जाना जाता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। सेकेंड, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है कराए जाएं, लाइक कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो बच्चों का स्ट्रेस जो है हेल्पफुल है, बहुत एक्टिविटीज होती हैं करवाने से बच्चे कुछ देर के लिए जो है अपने स्ट्रेस से रिलीव किए होते हैं। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी सपोर्टिव स्ट्रेटजीज हैं, लाइक जो वर्कशॉप होती हैं, बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप होती हैं जहाँ पर ऐसे सेशन चलाए जाते हैं कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि अपना स्ट्रेस कैसे रिलीज कर सकते हैं। उनको किसी भी तरीके का प्रेशर होता है, चाहे एग्जाम्स का प्रेशर है, चाहे फैमिली साइड से कोई प्रेशर है, उन चीजों से कैसे डील किया जाए। हमारा मतलब ये नहीं है कि मेंटल स्ट्रेस को सिर्फ हमें हमने एक लंबे सेशन दे दिए, लेक्चर दे दिए, मेंटल हेल्थ ठीक हो गई, नो। बच्चे क्या जिस भी तरीके का इशू है उसको वो प्रॉब्लम फेस करनी आनी चाहिए, तभी वो अपने जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक कर सकता है, तभी चीजों के साथ डील कर सकता है। नेक्स्ट, टीचर क्या रोल प्ले कर सकता है। टीचर एक जिसके साथ स्टूडेंट सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहता है। बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आ रही है, क्या उसको बदलाव आ रही है, पहले कौन नोट डाउन करता है, टीचर। टीचर को एक इमोशनल सपोर्टर माना जाता है। टीचर जो है वो सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहता है स्टूडेंट के साथ। टीचर है वो encourage कर सकता है स्टूडेंट को कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है वो जब तक डिस्कस ही नहीं करेगा वो कैसे अपनी प्रॉब्लम से निकलेगा। टीचर टीचर का रोल यही है कि वो बच्चे को सबसे पहले कंफर्टेबल जोन में लाए, ताकि बच्चे अपनी जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सके, अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी कर सके। अब रोल ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। पेरेंट्स प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो पेरेंट्स का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पे बहुत प्रेशर रहता है, अपने बच्चों पर बहुत प्रेशर रहता है। तो पेरेंट्स के लिए सबसे पहली एडवाइस यही रहती है कि वो अपने बच्चों के साथ ओपन रहें। रहेंगे बच्चा अपनी बात घर जाके डिस्कस करेगा, जो भी है, जो भी उसकी प्रेजेंट सिचुएशन जो भी चल रही है, अगर वो डिस्कस करेगा तभी वो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगा। सो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के लिए, या किसी भी तरीके का कोई सेशन पे वर्कशॉप लगाई जाती है, जो भी इनिशिएट लिए जाते हैं, टीचर पेरेंट्स को चाहिए कि उन चीजों के लिए इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करे और बच्चों की मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उनके लाइफस्टाइल को भी चेंज करे। नेक्स्ट आई कंक्लूड So I now invite Sumanjit ma'am from Department of Computer Science to offer their presentation. आज सब सारे चालू। तो मैम 2 मिनट है। हैं? नहीं, जैसे मर्जी कर लेते। Just 2 minutes. Next participants जो अच्छे 2 2 मिनट So good afternoon, all of you. I would like to thank our principal sir, our convener ma'am, and my dear students for giving me such a great opportunity to present my paper on the topic of art therapy. It's how AI is transforming mental health services. So, as you know, in today's era, science has been participated in each and every part of our life, from a small needle to an airplane. Nowadays, a lot of services and visuals we can imagine, we can make them true with the help of technology and science, and else we can say that with the help of artificial intelligence.
So AI is, I am starting with my introduction part. ठीक है, ओके, थैंक यू। वैसे ही बता देती हूँ। वैसे मैंने एआई को पॉजिटिव वे में ही पढ़ा था, मतलब किया हुआ है अपना प्रिपेयर। सभी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बता रहे हैं, बट मैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बताऊंगी कि जैसे हम एआई को नेगेटिवली देखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें स्ट्रेस वगैरह हो जाता है, या फिर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इन सब केसेस में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं। बट कभी-कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन की वजह से वहाँ पे उनके पास हो सकता है कि लेस टाइम होने की वजह से वो हर एक बंदे को एंटरटेन ना कर सकते हों। तो इसीलिए चैटबॉट्स वगैरह बनाए गए हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या है कि हम हमारा डेली जो भी हमने सोचा हुआ है, या फिर जो भी हमारी फ्रस्ट्रेशन है, वो हम निकाल सकते हैं किसी ऐसे चैटबॉट में जाकर, या फिर किसी ऐसी ऐप को यूज करके जो हमारे लिए एज अ स्ट्रेस बस्टर काम करे। तो एआई मेरे लिए तो एज अ स्ट्रेस बस्टर है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश प्रेजेंट करने का। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा, इसलिए मैं तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के साथ ही जाऊंगी। So thank you all, and thank you, sir. So the topic, sleep disorders. So please ध्यान से सुने. So sleep disorders. Let me get it. Good afternoon, everyone. My topic is sleep disorders, the mental health impact. तो फर्स्ट स्लीप क्या है? इट्स स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है कॉन्शियस अवेयरनेस की, हमारा जो ब्रेन है वो ज्यादातर हमारी बॉडी के इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो स्लीप डिसऑर्डर क्या है? स्लीप डिसऑर्डर्स कोई भी कंडीशन है जिसमें पर्सन डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करते हैं सोने में। जैसे हमारी क्वालिटी जो स्लीप की है वो अफेक्ट हो जाती है, स्लीप है वो अफेक्ट हो जाती है। किसकी होते हैं? मोबाइल फोन जो हम लोग गैजेट्स यूज करते हैं उसकी वजह से। स्लीप डिसऑर्डर्स जो है इसका इम्पैक्ट हमारे सोशल और पर्सनल फंक्शनिंग के ऊपर भी पड़ता है। प्लीज सुन लीजिए, हमें पता है हम कितना डर डर के यहाँ पे आए हैं, प्लीज सुन लीजिए। Causes of sleep disorders. Sleep disorders तीन होते हैं, फर्स्ट स्ट्रेस, एंजाइटी। तो किसी तरह की डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी फील करते हैं, वो किसी काम से रिलेटेड हो सकता है। जैसे फाइनेंशियल इश्यूज है, किसी को कोई रिलेशनशिप इश्यूज है, तो उसकी वजह से जो हमारी स्लीप है उसमें डिस्ट्रप्शन आना शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाती है। सेकेंड, पोर स्लीप हाइजीन। Poor sleep hygiene means irregular sleep schedule. Means हमारा जो circadian rhythm है वो खराब होने की वजह से। circadian rhythm क्यों खराब होता है? वर्क की वजह से। जैसे कोई 15 दिन डे टाइम पे काम कर रहा है, 15 दिन वो रात को काम कर रहा है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी का जो नेचुरल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग जेट लैग की बात करें, तो इंडियन पीपल अगर जाते हैं यूएसए में जाते हैं, हमारे यहाँ होती है तो यूएसए में दिन होता है, तो जो इंडियन पीपल यूएसए में जाएंगे उनको दिन के टाइम पे वहां पर नींद आएगी, क्योंकि कार्डियन रिदम जो हमारी नेचुरल बॉडी की क्लॉक है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। सेकंड, सॉरी, थर्ड इशू इज मेडिकल कंडीशन। अगर कोई भी किसी तरह की किसी को मेडिकल कंडीशन है, जैसे क्रॉनिक पेन है, स्लीप एपनिया है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है बॉडी में, डिप्रेशन है, पीएचडी मीन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्लीप डिसऑर्डर्स है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मतलब मूड स्विंग्स होती हैं, ठीक है, डिप्रेशन फील करते हैं, तो उसकी वजह से जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर मेडिकेशन, तो हम बहुत तरह की मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स है, ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन ली जाती है,
से भी जो स्लीप है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल फैक्टर्स हमारी जो हम लोग कैफीन कंज्यूम करते हैं, अगर सोने से पहले कैफीन ली जाएगी, मतलब कॉफी की फॉर्म में ले सकते हैं, टी की फॉर्म में, उसकी वजह से भी हमारी जो नींद है वो खराब हो सकती है। अगर नींद ठीक नहीं आएगी तो मतलब हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट इज सर्काडियन रिदम डिसरप्शन, वही जो हमने पीछे डिस्कस किया, फॉग की वजह से, जेट लैग की वजह से जो स्लीप शेड्यूल है वो इंटरप्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज एज रिलेटेड चेंजेस, मतलब एज के साथ साथ जो स्लीप पैटर्न है वो भी चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। ओके, आप प्रेजेंट करिए। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ओके। हेलो, mental health laws, a global review of rights, reforms, and implementation. This is my topic. Good afternoon. समझने आई हूँ। शेड्यूल एक ही वर्ड से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, दैट इज ह्यूमन राइट्स डे। नो, को मुझे यहाँ खड़ा किया तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन पूछूंगी ना। नो, 10th ऑफ अक्टूबर, 10th ऑफ अक्टूबर, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। फर्स्ट टाइम 1992 में मनाया गया था। ये यूएनओ में WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक पार्ट है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। तो उसने ये शुरू किया। जो हम मेंटल हेल्थ को हम लोग अपने ऊपर एक स्टिग्मा समझते हैं कि उसको कैसे दूर किया जाए, मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए कैसे हम डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर किसी को मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये समझ लिया जाता है कि ये तो पागल हो गया, ये तो पागल है, डॉक्टर के पास जा रहा है। इस चीज से निकलने के लिए जो बच्चों पे असर हो रहा है, जैसे इसको हम फिजिकल एज के साथ जोड़ रहे हैं, बच्चों के ऊपर जो इसका स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है। पहले हम भी छोटे थे, हमें इतना स्ट्रेस नहीं था इन सब चीजों का। बड़े हुए वर्क प्लेस से भी, सॉरी प्रिंसिपल सर, मैं अगर कुछ बोल दूं तो पहले सॉरी, तो बोल मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, तो मेंटल स्ट्रेस कब पड़ता है? रात को 10 बजे आपका मैसेज कोई आ जाता है, हाँ? स्लेप नहीं थी तो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं आते थे। शांति होती है, आप हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर होती है ना कि कल जाके क्या होना है, और तो प्रिपेयर भी हो जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही इफेक्ट है इसके। एक्चुअली मैंने कब होता है जो नहीं होती है, कई लोग तो खड़े यहाँ पे आके पता चलता है मैं फोन देखती ही नहीं, ये तो क्या गलती है भाई, उसका स्ट्रेस लेवल कितना हाई हो जाता है उस टाइम। ये वो बुद्धू है थोड़ा। अरे आपका 10 बजे तक की सो ही जाती है। थैंक यू। So thank you all for your kind patience, and now it's time for the valedictory. I request Principal Sir and convener of the national seminar to please come forward to distribute the certificates to the participants. Ma'am, इधर 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 नाम बता दो।
ये ये सिर्फ ऑफलाइन वाले थे हैं. Okay. So first of all, I call upon Professor Mahima Thakur from Department of Commerce to take up her question. Professor Sonia Abdullah from Department of Commerce, please come upon board. Next, Professor Sumanji.